Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें यूलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी ए विषय रे पढिबा. So for this purpose we will consider a rigid body in motion with one point fixed and it is taking place under the action of a torque represented by capital N in such a way that its total angular momentum varies at the rate equal to n, that is dl by dt equal to n, and it is quite similar with the Newton's second law of motion जोथिरे कि हमें जानिछु the force is directly proportional to the rate of change of linear momentum, right? Now here the time derivative refers to the space set of axis, for the equation holds only in an inertial frame of reference or system. Now जदि आमे एबे गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम नेबा which is rotating with the body माने body coordinate system बा body set of axis, then आमे पाइथिला rate of change of vector रू गोटे relation time derivative रो, that is d by dt of space equal to d by dt body plus omega cross. ताले याको एबे आमे यूटिलाइज करिबा. सो ए इक्वेशन 1 जोटा स्पेस रे हमें पाइथिला एबे बॉडी सेट ऑफ एक्सिस रे याको हम लिखि परिबा लाइक दिस dl by dt body plus omega cross l equal to n. Okay, and here it is found most convenient to choose the principal axis for which the angular momentum l equal to I1 omega xi plus I2 omega yj plus I3 omega z k, where omega x, y and z are nothing but the components of angular velocity vector along the principal axis. So from this equation 3 and remembering that the principal moments of inertia jota ethi I1, I2, I3 and the body base vector, that is the unit vectors I, j, k are constant in time. Okay, they are constant with respect to time and with respect to the body coordinate system. Okay, we find that time derivative जदि आमे काढ़िबा a angular momentum L रो, that is dl by dt of the body in the rotating system, that is the body coordinate system, it will give I1 omega x dot I. Okay, remember आमे नेइछु I1 आउ जो यूनिट वेक्टर I स्मॉल I एटा कांस्टेंट रहउछि with respect to time, तेणु ए टाइम डेरिवेटिव टा केवल एंगुलर वेलोसिटी ऊपर ही ऑपरेट हला. ओके, सो I1 omega x dot I plus I2 omega y dot j plus I3 omega z dot k. Okay, so एटा हमें पाई गला. Now x component एबे हमें equation 2 जो torque पाई लिखिथिला ताले यार x component nx हमें याकू लिखि परिबा n dot I. Okay, so याकू हमें एबे solve करिबा. Okay, we are getting I1 omega x dot minus omega y lz minus omega z ly. Okay, because एटा होची omega cross l रो x component. So याको हमें हिसाब रे सजे की लिखि देला. Now similarly हमें ny और nz which are the y and z component of the torque याको भी बाहर करि परिबा. Okay, so एबे जो तीनटा set of equation हमें पाइला. Okay, these are called the Euler's equation of motion of a rigid body with one point fixed. Okay, so it is as per the Newton's mechanics. Okay, there is also another alternative method which is the Lagrange's method. Okay, so jemti कहली it is an alternative approach to this equation, that is the Euler's equation in the Lagrange's method using the Euler's angles जोटा phi theta psi हमें पढ़ीतिला. Okay, so याको हमें नहीं जबा as the generalized coordinates when one point of the body is fixed and only
the rotational motion is possible, and Euler's angles completely describe the orientation of the rigid body. Okay, এটা আমি জানিଛୁ. So in such a situation the Lagrangian याको ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା as T minus B, that is the kinetic energy minus the potential energy, and it should be a function of the Euler's angle, that is phi theta psi only. Okay, thus the kinetic energy will only involve these coordinates, and likewise the potential energy. Okay, so for conservative forces ଆମେ ଜାଣିଛୁ Lagrangian କୁ ଲେଖି ପାରିବା L equal to T as a function of phi dot theta dot psi dot phi theta psi. Okay, माने Euler's angle dot time derivative ଆଉ Euler's angle, କିନ୍ତୁ potential ଟା କେବଳ phi theta psi ଉପରେ depend କରିବ, ଏଟା time derivative ଉପରେ depend କରିବ ନାହିଁ. Okay, so এই kinetic energy को ଆମେ ଏହି ହିସାବରେ ଲେଖି ପାରିବା ଯୋଉଟା ଆମେ rotational kinetic energy previous class ରେ ପାଇଥିଲା ତାର expression. Okay, so here we have chosen preferentially the principal axis as the body set of axis, that is here I1, I2 and I3 are the principal moments of inertia for the fixed point, and the kinetic energy depends upon phi theta psi via the angular velocity components along the principal axis, that is x, y, z. Okay, acha. Now it will be remembered that the generalized forces which are corresponding to these angular coordinates will be the components of the impressed torque, जोटा तुमरो torque रो component रहुची ता ऊपर एटा डिपेंड करूची. ओके, along the axis of rotation. ओके, एटा ऑलरेडी को सेक्शन रे अछि ताको भी वही मेंशन कर दीची. ओके, now here the angle psi happens to be the angle of rotation about the principal z axis, एटा हमें जानिछु. So that the angular velocity omega psi will be nothing but psi dot, and we have the generalized force or the z component of the impressed torque, that is nz equal to minus del v by del psi. Okay, and the Lagrange's equation for the psi coordinate system can be written now as d by dt del t by del psi dot minus del t by del psi, which is equal to minus del v by del psi, and यार value टा हमें पाई गला nz, याको हमें put कर देला एठी. Okay, so for convenience we reproduce here the angular velocity components expressed in terms of the Euler's angle, and kinetic energy expressed in terms of the angular velocity component, that is omega x, y and z. Okay, at the referred principal axis. Okay, माने देखो आमे angular velocity रो जो value already पाई थिला. Okay, in terms of Euler's angle एतिकी value पाई थिला. So एठी आमे जदि kinetic energy जगह रे put करी कि partial derivative जदि आमे बाहर करूछु एई सब angular velocity रो. Okay, with respect to 6 quantities. Okay, so देखो partial derivative 6 quantities केमती हैला, because suppose omega z को आमे दुईटा partial derivative लगे परिबा, गोटे हैला psi dot आ गोटे हैला psi. ओके, सो एटा दुईटा आसिला. सिमिलरली ओमेगा x पई दुईटा आसीबो. ओके, psi dot आ psi रो partial derivative, आ फाइनली ओमेगा y पई दुईटा आसीबो. Accordingly we are getting 1 0 0 0 omega y minus omega x. Okay, so एतिकी पाइला पोरे we can replace जोटा कि kinetic energy और partial derivative आमे जदि करूछु with respect to psi dot and psi. Okay, we can replace. So एटा देखो with respect to psi dot कले एटार value आछी I3 omega z, और with respect to psi कले आछी I1 minus I2 omega x omega y. Okay, याको एबे substitute करिबा equation 9 रे. Okay, so we are getting this equation. ताले चेक करिवो जोटा तमे फर्स्ट बाहर करथिलो इनिशियली न्यूटन मेकानिक्स यूज करी कि Lagrange's method रे भी सेम ही रिजल्ट आछी. इट इज आइडेंटिकल with the z equation obtained earlier. So ठीक से बड़ी nz जेमती बाहर कला हमें nx और ny माने the other two components, other two equation can also be obtained. Okay, similarly by permutation of the indices. Okay, so सेटा भी देखिबो satisfy करिवो
earlier जोटा equation हमें पाइथिला. Okay, so here we are justified in doing so due to the fact that identification of one of the principal axis as the z axis is entirely arbitrary. Okay, हमें arbitrarily z axis को choose करचो as the principal axis, and it should be emphasized however that these two equations shall not be the generalized equations for the theta and phi coordinates. Okay, अच्छा तापरे फाइनली इक्वेशन ऑफ मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस. सो जेतेबेले आमे रिजिड बॉडी रो इक्वेशन ऑफ मोशन गोटे एबे फिक्स्ड एक्सिस नहीं जिबा. ओके, फिक्स्ड एक्सिस ताले एटा सिंप्लीफाई करि हबो फर्दर as only one component of angular velocity now will appear because गोटे पूरा फिक्स्ड एक्सिस रे बॉडी टा रोटेट करूची. ओके, सो सपोज हमर एक्सिस ऑफ रोटेशन हे गला लेट अस से z एक्सिस, ताले ओमेगा z हे जिवो सिंपली ओमेगा, आउ एथिरे किछि भी y बा x कंपोनेंट रहिबो नाही, दैट इज ओमेगा x इक्वल टू ओमेगा y इक्वल टू 0. ओके, ताले एबे सिंपली हमें लिखि परिबा एंगुलर मोमेंटम ताकू जोटा हमें वैल्यू ए हिसाब रे दे देला, तापर जो हमरो ओमेगा रो वैल्यू अछि ताकू पुट करला. ओके, अच्छा नाउ टॉर्क से भलिया हमें बाहर करि परिबा n इक्वल टू dl बाय dt. ओके, सिमिलरली हमें एठी ओमेगा रो ही वैल्यू पुट करबा व्हिच इज नथिंग बट हियर ओमेगा z. ओके, अच्छा ताले एठी सपोज ix. ओके, सो एटा होची कोन, एटा तमरो जो diagonal elements बा principal moment of inertia जो थिला, and these are the constants when the point of the body is fixed. Okay, and also हमें एठी जेतु नौचु ओमेगा x आ ओमेगा y को 0, तेणु di by dt. ओके, ए जो वैल्यूटा di by dt एटा हे जिवो जोटा तमे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर से हिसाब रे जदी लिखुजो ताले ओमेगा क्रॉस i यार वैल्यू हबो. ओके, आउ एठी हमें ओमेगा रो वैल्यू पुट कला, तापरे ओमेगा x एटा कटि गला, ओमेगा y भी कटि गला, ओमेगा z इज सिंपली ओमेगा. ओके, सो यार वैल्यू k ओमेगा क्रॉस i दैट इज इक्वल टू j ओमेगा. सिमिलरली dj बाय dt हे जिवो माइनस i ओमेगा, dk बाय dt हे जिवो इक्वल टू 0. ओके, ताले याकू एबे रिप्लेस करिबा. सो हमरो टॉर्क रो वैल्यू आउ टिके एबे सिंप्लीफाई हे गला. ओके, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज तापरे इक्वेट करिबा x y आउ z कंपोनेंट्स को सेपरेटली लिखि परिबा हमें nx ny nz रो वैल्यू हमें पाई गला. ओके, नाउ फ्रॉम द इक्वेशंस 13 जो तीनटा सेट हमें इक्वेशन पाइला, इट appears that only the last of them is consistent with the physical motion. Okay, last of them माने एटा जो nz. Okay, while the first two determine the constraining torques. Okay, so ये जो फर्स्ट दुईटा आम कंपोनेंट देखु nx आ ny, एटा जो constraint रोची टॉर्क रो एटा हमको देखो which are required to prevent the axis of rotation from changing its direction. माने z axis जोटा कि axis of rotation हमें arbitrarily choose करछु ताकू maintain रखी धरिबा पई nx आ ny रो एई वैल्यूटा डिसाइड करूची. Okay, and if the axis of rotation z happens to lie along any one of the principal axis of the rigid body, that is the axis of symmetry hi gala ta mane. Okay, so we obtain now the equations with nx और ny एटा simply 0 हो जिवो, because यदि axis of symmetry हला माने हमें जानिछु products of inertia 0 हो जाए. so ix z iy z iyz ixz ए सब 0 हो जिवो. ओके, राइट, ताले एठी nz रो वैल्यू सिंपली izz omega dot, or simply we can write I omega dot, where I is nothing but only principal moment of inertia. Okay, that is the moment of inertia about the axis of rotation, which is the axis of symmetry. ताले kinetic energy now will have the simplest form, that is half omega dot L, that is half यार वैल्यू हमें पुट कर देले half I omega square. Okay, so this is all about the Euler's equations of motion of a rigid body. Thank you.